xg be a metric space and d dash xy is equal to dxy 1 plus dxy. It means we are defining a new metric from a given old metric. Okay. Now first we have to show that this d dash is finite. So dxy is less than 1 plus dxy, we know. So dxy 1 upon dxy is less than 1, so that is why d dash xy is always less than 1. Okay. So from here we can say that this d dash is always finite. So we can say d dash is, this function is well defined, that is from space to the R. Okay. Now next, first d dash xy is greater than equal to 0, obviously because d greater than equal to 0 hai. So 1 plus g is always greater than 0, so that is why this whole number is always greater than equal to 0. Next, d dash xy is 0. We have to show, always keep writing to show x equal to y. Now d dash xy equal to 0 if and only if dxy upon 1 plus gxy is 0. If and only if, can I say dxy equal to 0? So if dxy upon 1 plus dxy is 0, then obviously it is simple, just multiply on both sides by 1 plus dxy. So you will get what? Dxy equal to 0. And by definition of metric, if dxy equal to 0, because d is a metric, because we are given this. Now third, d dash xy equal to d dash yx to show for all xy belonging to x. Now that means to show dxy upon 1 plus dxy equal to dyx upon 1 plus dyx to show. Now consider left hand side, dxy is equal to what? D dash 1 plus dxy upon 1 plus dxy. This is same as, can I write this? Can I write this? Obviously, because g is a metric, so dxy is same as dyx. So using this, because d is a metric, so this is what? D dash yx. Now the fourth one is very interesting, not so easy to solve or not so easy to prove. That is, d dash xy is less than equal to d dash xz plus d dash zy for all x, y, z belonging to x. That means we have to show dxy upon 1 plus gxy is less than equal to dxz 1 plus dxz plus dzy divided by 1 plus dzy for all x, y, z belonging to x. We have to show this. Now, any idea how to show it or how to prove it? Anyone? So see here, d, can I write this? We are given this. Check. Now, if this is less than equal to this, can I write this? Adding 1 on both sides. Simple. Now what? Right? Taking negative. Adding 1 on both sides. Not so easy.
and next steps gives you what? Dxy upon 1 plus gxy is less than equal to dxz plus dzy 1 plus dxz plus dzy. Now what? We have on right hand side this, but we want on right hand side what? This. How to get this right hand side from here? So how to get it? Okay, now we can separate. This is same as dxz plus dzy divided by 1 plus dxz plus dzy upon 1 plus dxz plus dzy. Now any idea how to get this from here? आधे से कम थोड़ा ले लो सर आप. So now, ठीक है भाई. Now how to get this right hand side from here? We have one extra term here, dzy, here dxz. So one extra term. How to get rid of them? Yes. So now see here. Can I write this? This is less than equal to dxz plus 1 upon dxz plus dzy divided by 1 plus dzy. Obviously, अगर आप डिनोमिनेटर में से एक टर्म कम कर रहे हो नॉन नेगेटिव, तो ओवरऑल नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. So this proof is not so easy. It is a tricky proof and you will not get in any book. So अगर आप इसमें देखिएगा शेराली की बुक में absolutely different proof and this one is new proof. So any student, any problem, any doubt? चलें आगे. So next is what? Your metric spaces. इसमें ये ध्यान रखिएगा, इस प्रूफ के अंदर मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंसेस का टॉपिक है. सो नाउ इसके अंदर हमें ये चीज ध्यान रखने की है कि जब आप ये इनइक्वालिटी जो स्टार्टिंग हमें गिवन है इससे शुरू करोगे, you have to add 1 on both sides, take reciprocal, after that take negative sign and then add 1 on both sides, and after that यहां पे आप इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके आप जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको रिमूव करेंगे. दैट्स इट. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. लेट xg be a metric space and in a given metric space how can we define a sequences or convergence of a sequences. First question, if I say sequences, then what is the definition of a sequence? Natural question. Let xg be a metric space. A sequence of points in X is a function f from where to where? Set of natural numbers to space X such that fn is equal to xn. So sequence is nothing but a function from the set of natural numbers to the space, and a sequence is denoted by xn, n greater than equal to 1, x1, x2, x3 and so on, and xn, n belonging to n. So any one of these notations you can use. Chalo, next we have a definition. Definition of a convergence of a sequence in a given metric space. So let xg be a metric space
let xg be a metric space, a sequence xn and greater than equal to 1. I will use this notation. Xn and greater than equal to 1 is said to be convergent to an element x belonging to x if for each epsilon greater than 0 there exists a number n not in n such that distance between xn and x is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. Let xg be a metric space. A sequence xn is said to be convergent to an element x in x if for each epsilon greater than 0 there exists n naught belonging to n such that dxn x is less than epsilon for all n greater than equal to n. पहली चीज एक चीज अपने माइंड में बैठा लो, एप्सिलॉन इज नथिंग हियर, इट इज जस्ट लाइक जैसे आप वेरिएबल यूज करते थे ना, लेट x बी एज ऑफ मामा एंड y बी एज ऑफ पापा, ठीक है, ऐसे यूज करते थे. x और y क्या है, डमी सिंबल्स है. ऐसा तो नहीं है कि मैं मदर की एज को y नहीं बोल सकता और फादर की एज को x नहीं बोल सकता. दीज आर डमी सिंबल्स, ठीक है, नथिंग टू डू विद x एंड y. सिमिलरली हियर एप्सिलॉन इज लाइक जस्ट अ डमी सिंबल, ठीक है. अगर मैं इसको x लिखता, क्योंकि ऑलरेडी हम x यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो हम x नहीं कर सकते हैं. सपोज मैं इसको y यूज करता, ठीक है. सो लेकिन अगर सपोज उसमें फिर 2 पॉइंट्स होते तो नहीं. सो एक अलग सी नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन हमने फॉलो की है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं. अगर हम इसको फिजिक्स में जाके देखें, जनरली हम एप्सिलॉन वहां पे यूज करते हैं फॉर एरर, ठीक है. कौन सी आफ्टर nth इटरेशन कितनी एरर आई, ठीक है, तो उससे यहां से एरर से आया, ये एक इसका रीजन है. बट डोंट थिंक कि जनरली स्टूडेंट्स जो है एप्सिलॉन के साथ देखते के साथ उन्हें बड़ा मतलब एकदम से पता नहीं, दे थिंक कि मतलब बहुत अलग चीजें आ गई है. सो थिंक इट इज जस्ट लाइक कि एप्सिलॉन इज नथिंग बट एनी रियल नंबर which is greater than 0. Any real number. Suppose we are given any real number which is greater than 0. There exists always n naught term. n naught is there belonging to set of natural number. But इसको हम क्या बोलते हैं, n naught term बोलते हैं. Such that the distance between x and x की तरफ वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है. तो डिस्टेंस जो है x and x के बीच में क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन है सभी टर्म्स आफ्टर n नॉट के बाद. अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली समझें, ये तो है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसको ज्योमेट्रिकली कैसे हम रिलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है, से x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 एंड सो ऑन. अगर मैं कन्वर्जेंट बोल रहा हूं तो नेचुरली वो किसी एक नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रही है. टर्म्स आर टेंडिंग टुवर्ड्स सम नंबर, डेफिनेटली ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना. कन्वर्जेंस, ये कन्वर्ज करिए, मतलब टर्म्स आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, x2 x3 x4. फॉर एग्जांपल सीक्वेंस 1 by n, 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5. now you can see terms are coming closer and closer and tending towards a number से 0, ठीक है. अगर हम इसको देखें, लिमिट पॉइंट क्या है, यहां पर x है, यहां पर क्या है 0, ठीक है. अगर मैं कहता हूं कि ये सीक्वेंस x की तरफ कन्वर्ज करती है, या मैं ये सीक्वेंस कहता हूं 1 by n की तरफ 0 की तरफ कन्वर्ज करती है, तो अगर हम डिस्टेंस की टर्म्स में देखें, डिस्टेंस की टर्म में जब ये हम आगे मूव करते हैं तो जो टर्म्स का डिस्टेंस है x से, जो टर्म्स का डिस्टेंस है x से, वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ. सो टर्म्स आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द लिमिट पॉइंट x. यू कैन सी हियर ऑल्सो, जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे, कहां जा रहे हैं आप, फाइनली 0 की तरफ. तो डिस्टेंस आपके मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है. अच्छा देखिए, यहां पे अगर मैं एप्सिलॉन को 1 by n ले लूं, सो इट मींस क्या कह रहा है कि आफ्टर सम टर्म जो डिस्टेंस होगा x का और बाकी टर्म्स का वो लेस देन 1 by n होगा. नाउ एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस डिस्टेंस इज टेंडिंग टू वेयर, 0. समझ रहे हैं, एप्सिलॉन यहाँ पे आर्बिट्री नंबर है, आई कैन पुट एनी नंबर, से 1 by n.
So 1 by n अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, so there exists a term such that the distance between the nth term, you should say like this, the distance between the nth term and the limit point, the nth term and the limit point is always less than 1 by n for all n greater than equal to n naught. Now as n tends to infinity, this is less than 1 by n. एक बात बताइए, जब n infinity की तरफ जाएगा तो डिस्टेंस कहाँ जाएगा? जीरो की तरफ. So, जो आप मैथमेटिकली देखते हैं, जो आप ज्योमेट्रिकली सोचते हैं, एग्जैक्टली सेम उसको मैथमेटिकली टर्म्स में हमने एप्सिलॉन के लिखा है. सो देयर इज नो डिफरेंस. यहाँ पे डिस्टेंस जीरो की तरफ जा रहा है, इट इज सेम एज द डिस्टेंस x and x इज लेस देन एप्सिलॉन. आर्बिट्रेरी, यू कैन टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1 by 10 की पावर 100, 1 by 10 की पावर 1 million, 1 by 10 की पावर 100. So number is getting what? Smaller and smaller and smaller. So any number, और इतना छोटा जितना आप सोच सकते हो, as much as small you can think. ठीक है, 1/10 की पावर 1/10 की पावर 1 million, very small number. So you can see the distance is what? Tending towards zero. So is this definition clear to everyone? कि कन्वर्जेंस हम कैसे इसको बोलते हैं? तो जो हम मैथमेटिकली बोल रहे हैं कि सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर नंबर x की तरफ जा रही है, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ टर्म. अब इसको देखो, इस तरीके से भी हम इस तरीके से कहते हैं, अगर वो लेस देन एप्सिलॉन की टर्म्स में कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, तो एक एप्सिलॉन का नेबरहुड ले ले भाई. डिस्टेंस क्या कह रहा है? लेस देन x, तो एक एप्सिलॉन का नेबरहुड लिया. वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x, एक टर्म ऐसी आपको मिलेगी कि x नॉट के बाद जितनी भी सारी टर्म्स है उनका डिस्टेंस क्या होगा? लेस देन दिस एप्सिलॉन. मींस विद इन दिस डिस्क लाई करेगा, सभी टर्म्स विल लाई विद इन दिस डिस्क. तो अब डिस्क कितनी भी छोटी लीजिए, आप छोटे करते रहिए, यू विल डेफिनेटली गेट सम टर्म. आफ्टर दैट ऑल द टर्म्स विल बी विद इन दिस डिस्क. जितनी भी टर्म्स होंगी वो क्या होगी? वो सारी इस डिस्क के अंदर होगी. सो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन कि हम ज्योमेट्रिकली जो सोचते हैं कन्वर्जेंस, वो मैथमेटिकली हम कैसे रिलेट करते हैं? ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर मान लीजिए अ सीक्वेंस कन्वर्ज करती है x को, देन इन दिस केस व्हाट वी से x? वी से x इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस. इन दिस केस x is the limit of the sequence xn. ठीक, कन्वर्जेंस. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा, वन वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन. अगर सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू x, ये नोटेशन है इसका. सो when I say xn converges to x, so how can we write in notation form? This is the form, xn converges to x. या तो लिखो xn converges to x in this with arrow form as a notation, या फिर लिखिए xn converges to x in words. So it's better you write this. ठीक है, xn converges to x. Can I say if and only if distance between limit and tending to infinity, distance between x and x is 0 from here. यही तो मैं बोल रहा था कि सीक्वेंस x and x क्यों जाती है जब dxn डिस्टेंस कहां अप्रोच करता है? जीरो की तरफ. So limit, saying limit equal to 0 is same as the distance is tending towards 0. Same. ठीक है. अच्छा, अगर xn कन्वर्स करती है x को, एक बात मुझे बताइए, if xn converges to x, so therefore for each epsilon greater than 0 there exists n not belonging to n such that by definition I can write this. अच्छा, we know that limit n tending to infinity a n 0 कब होता है? From the real analysis, recall. लिमिट n टेंडिंग टू a n 0 कब होता है? इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंगिंग टू n such that mod of a n minus 0 is less than epsilon for all n greater than equal to n naught. Right?
This is the definition of convergence of a sequence or sequence converging to 0. ठीक है, और converging actually in general क्या होता है, an converges to L. For each epsilon greater than 0, there exists n not belonging to n such that mod of an minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to n naught. ठीक है, now this can be rewritten like this, that is mod of an is less than epsilon. एक बात मुझे बताओ, if dx and x is less than epsilon, can I write this? Because d is always what, greater than equal to 0 by definition of metric, so I can put mod here. And now if you compare both of these two are exactly same. So for each epsilon greater than 0, there exists n naught such that mod of dx and x is less than epsilon, mod of an is less than epsilon. Here dx and xn is same as an. So from here, so therefore can I say from here limit and tending to infinity dx and x is same. From here I can say, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है कि लिमिट an कब आएगी, जब ये सेटिस्फाई करेगी. तो अगर मुझे ये शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है, इट मींस मुझे क्या शो करना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कौन, ये. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट द लिमिट इज सी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बेसिकली मैंने ये क्या लिखी है, ये डेफिनेशन है कि कोई भी सीक्वेंस 0 की तरफ कब कन्वर्स करती है. हमें क्या चाहिए था, ये चीज कैसे आएगी, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. यहां से हमारे पास क्या आया, ये, और हमें चाहिए क्या था, ये. दोनों चीज सेम है, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, सिर्फ सिंबल का तो डिफरेंस है. आइदर आई राइट डी और ए एन, बोथ आर सेम, सो बोथ ऑफ दीज आर सेम, सो दैट इज व्हाई इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू सी. क्लियर? सो अब हम जो है सीक्वेंसेस की तरफ आ रहे हैं, थ्योरी की तरफ. आपने कहा था बिगिनिंग बड़ी इजी होती है, सो नाउ बिगिनिंग से थोड़ा आगे आ गया. ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकली अगर हम सोचें, एक सीक्वेंस कन्वर्स करती है एल को, एक सीक्वेंस कन्वर्स करती है एल डैश को, सेम सीक्वेंस. इज इट पॉसिबल कि एल और एल डैश अलग अलग हो? सो वी कॉल इट एज अ यूनिकनेस ऑफ लिमिट. कि मान लीजिए एक सीक्वेंस कन्वर्स करती है एल को, ठीक है, मान लीजिए xn कन्वर्स करती है x को और xn कन्वर्स करती है y को. देन x, इफ द सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, देन x मस्ट बी इक्वल टू y. यू मस्ट हैव डन दिस रिजल्ट. अब यहां पे कैसे करेंगे, जो प्रूफ आपने वहां दिया था ना फर्स्ट ईयर के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर, डिट्टो सेम प्रूफ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. जहां मोड यूज किया था ना, वहां पे आपको डी यूज करना है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक है, मान लीजिए लेट एक्स जी बी अ मैट्रिक स्पेस, यूनिकनेस ऑफ द लिमिट वी आर प्रूविंग. ठीक है, सो लेट एक्स जी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड सीक्वेंस xn converges to x, let and sequence xn converges to y, then x is equal to y. We have to prove this is nothing but the uniqueness of the limit. We call this result as a uniqueness of the limits. Now proof, how can we prove? To show, as I say, always keep writing to show. Always start with to show what we have to prove. क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि टू शो क्या करना है और गिवन क्या है. कुछ स्टूडेंट्स गिवन को प्रूव करने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है उसको प्रूव करने लगते हैं और जो टू शो करना है उसे गिवन मान लेते हैं. बट दैट, सो नाउ इफ पॉसिबल, suppose x is not equal to y. We have to show this. And naturally, if x is not equal to y, so without loss of generality, we may assume that dxy is greater than 0.
ठीक है. So without loss of generality, no need to write. Then it means clear by definition of metric dxy is always greater than 0. Now we can choose an epsilon greater than 0 such that dxy is greater than epsilon greater than 0. This is the most important step in this proof. Means epsilon is less than dxy but greater than 0. Now, as the sequence xn converges to where? X. So by definition, therefore, for corresponding to epsilon by 2 greater than 0, there exists n1 belonging to n such that distance between xn and x is less than by epsilon by 2 for all n greater than equal to n1. In definition, we have n0, but here I am writing n1. Why? Because we will use one more n0 here. Also, y xn converges to y. So therefore, corresponding to epsilon by 2 greater than 0, there exists n2 belonging to n such that distance between xn and y is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n0. Remember, हमारे पास दो अलग अलग लिमिट है. Then the n0, these two n0 need not be the same. वो दोनों सेम नहीं हो सकते. They may be different. तो just to distinguish them कि ये दोनों अलग हो सकते हैं, we are using n1 and n2. This is the only reason. भाई एक लिमिट y x की तरफ जा रहा है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें, मान लो ये x है और ये y है. टर्म्स ऐसे जा रही हैं, x की तरफ भी जा रही हैं और y की तरफ भी जा रही हैं. अब मैंने यहाँ पे एक नेबरहुड लिया, यहाँ पे एक नेबरहुड लिया. अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो n1 टर्म्स है, n0 आएगी, n0 टर्म, हम कोई भी टर्म एक मान के चलते हैं, यहाँ पे वो जो टर्म्स आएगी n0, वो तो सेम काम नहीं करेगी ना. These two n0 may be different. So that is why we are taking here in place of n0, n1 and n2. So these are nothing but dummy symbols. Don't think n1 is a great मतलब something special with this n1. ये बस हमने n0 को रिप्लेस कर दिया n1 से और n0 को रिप्लेस कर दिया n0 से. एंड एज यूजुअल जब भी हमारे पास सीक्वेंस में कभी भी दो n1 n2 आते हैं, then what should be the next step? Let n0 be what? The maximum of these two n1 and n2. क्योंकि अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये कंडीशन सपोज n1 मान लो 4 है और सपोज n1 मेरा मान लो 4 है और n2 मेरा 10 है. एक बात मुझे बताइए, अगर ये कंडीशन n1 4 के लिए होल्ड कर रही है और ये कंडीशन आफ्टर 10th टर्म होल्ड कर रही है, तो हम n0 क्या लें कि दोनों के लिए ये कंडीशन होल्ड कर जाए? नेचुरली 10, क्योंकि यहाँ फोर्थ और फोर्थ के बाद जितनी भी टर्म्स है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. ये क्या कहता है? 10th, और 10th के बाद जितनी भी टर्म्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब मुझे एक ऐसी टर्म बतानी है जिसके बाद ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए. देन व्हाट शुड बी n0? द कॉमन n0. देन दैट शुड बी 10 ओनली. सो हाउ डू वी गेट दिस 10? बाय टेकिंग मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2. दिस इज द रीजन कि हम मैक्सिमम क्यों लेते हैं. दिस इज द ओनली रीजन. ठीक है, ताकि उस टर्म के बाद 10th के बाद सभी टर्म्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए. सो नाउ लेट n0 बी द मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2. ठीक है, गिव इट नंबर 1, गिव इट नंबर 2. सो नाउ बाय 1 and 2 we have what? Can I write this? Distance between x and x and distance between x and y is less than epsilon by 2, less than epsilon by 2. This thing holds for all n greater than equal to n0, because now n0 is what? The maximum of these two, n1 and n2. तो हमने चूज इस तरीके से किया है n0 कि ये दोनों कंडीशन जो है सभी n0 या n0 की टर्म के बाद ये इसको सेटिस्फाई कर जाए. नाउ मेन चीज क्या थी? dxy. हमें क्या शो करना था? x इक्वल टू y की मतलब dxy 0 होना चाहिए, x इक्वल टू y शो करना है. अच्छा, नाउ कंसीडर dxy. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन? बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैन आई राइट दिस? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n आई कैन राइट. हर टर्म के लिए सेटिस्फाई करेगा, नो डाउट. बट
when I write this is less than epsilon by 2, by which step? Say it by 3. By 3. Can I write this plus epsilon by 2 for all n belonging to n? Can I say this? Can I say this for all n belonging to n? Everybody is saying yes. This thing hold for all n belonging to n. By third, this thing holds only for all n greater than equal to n naught. After n naught term ही तो ये चीजें hold करती है ना. So how can you say this thing holds now for all terms? सभी terms के लिए तो नहीं hold करती है. ये किसके लिए hold करती है? सभी terms जो n naught के बाद है. So that is why now we should write here for all n greater than equal to n naught by 3. And now this is what? This is nothing but epsilon. Now here by A you can say we have a contradiction. By A we have a contradiction. क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास क्या आ रहा है? Epsilon is less than this. Am I right? और यहां पर मेरे के पास क्या आ गया? dxy is less than epsilon. How is it possible? If epsilon is less than dxy, then how can it be greater than dxy? So that is why we have a contradiction. So what we do here? We always start with taking two limits, say x and y. If possible, suppose these two limits are different. If these two limits are different, then definitely dxy will always be greater than 0. By definition of metric, या तो दोनों पॉइंट सेम होंगे तब तो डिस्टेंस 0 होगा. अगर डिस्टिंक्ट है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. सो dxy. नाउ द नेक्स्ट वेरी, this is the cramming step. Choose epsilon greater than 0 such that epsilon is greater than 0 but less than dxy. अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आती है. कन्वर्जेंस की डेफिनेशन किसके लिए होती है? फॉर ईच, हर एक के लिए आता है. अब देखिए अगर हमने चूज कर लिया ना, इट मींस वी आर नाउ वी हैव टेकन एंड नाउ दिस एप्सिलॉन इज फिक्स्ड. यू कांट चेंज इट. नाउ दिस एप्सिलॉन वंस यू से choose or chosen, then it means now the epsilon is no more arbitrary. It is now a fixed number, any number, epsilon. So now for this epsilon, now convergence because for each epsilon होता है, so that is why corresponding to this epsilon by 2. आप कहिएगा कि सर डेफिनेशन में तो epsilon आता है. Now why epsilon by 2 here? क्योंकि हर epsilon के लिए होल्ड करता है तो नंबर तो मैं यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ ना. It is my choice. So epsilon by 2. अच्छा ये क्यों? Suppose यहाँ पे आप epsilon लेते हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 2 epsilon. Because यहाँ पे हमें क्या चाहिए? Epsilon. That is why we have to take here epsilon by 2 and epsilon by 2. तो यहाँ से स्टोरी आई, इसीलिए यहाँ पर मेरे पास epsilon by 2 आया. So epsilon by 2 dx and xn is less than epsilon by 2. There exists n1. n1 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं. So n1 in n such that distance between xn is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to n. This is nothing but the definition of convergence of a sequence in a given metric space. ठीक है? We just did it. हमने अभी की थी जस्ट थोड़ी देर पहले. So वही definition हमने यहाँ लिखी है. Similarly, convergence for y. So corresponding to epsilon by 2, you can see the same. No change at all. Only x, y, यहाँ y थी epsilon by 2 for. Next step is because दो अलग-अलग terms के लिए दो अलग ये condition hold कर रही है. So what we do? We take the maximum of this so that both of these conditions should hold for the same term n naught. ठीक है? तो n naught क्या हमने लिया? ये. So now you can see both of these conditions are satisfying or these inequalities are satisfied for all terms after n naught including the n naught term. Next, ये हमारे पास ये आ गया. So ultimately हमने क्या लिया? dxy. So this is by triangle inequality. D is a metric. This thing holds for all n. But in the next step, you can't write for all n belonging to n because this condition holds only for all n greater than equal to n naught. So now just sum it and you will get a contradiction by A. So very easy proof. And आप लोगों ने ये फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है सभी ने. आज घर जाइएगा, नोट्स खोल के देखिएगा, उसमें जो प्रूफ है और जो ये बोर्ड का प्रूफ है उसमें कितना डिफरेंस है. थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बट ज्यादा नहीं है. बट मोर और लेस सारा सेम पैरेलल प्रूफ चलेगा. इट डिपेंड्स कि आपने इफ पॉसिबल सपोज से स्टार्ट किया है या सीधा डेफिनेशन से शुरू किया है. इट डिपेंड्स.
कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, कुछ लोग विदाउट टेकिंग कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा प्रूफ में डिफरेंट है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।